स्क्रीन नीचे કરી દઈએ એમને ઉધરફોન કે फिलहाल दो बार तो स्क्रीन उसमें पावर पॉइंट છે ને એટલે આપણે આયે તો બતા દો ભાઈ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. صدق الله العلي العظيم. يا سيد الشهداء خامس أهل الكساء على عزيم بلائنا لك في كربلاء طول زمان بكائي ولهفتا يا حسين يا سيد الشهداء فلك الحسين بكربلاء ملك الحسين بكربلاء مسك الحسين بكربلاء مسك الحسين بكربلاء أبكي كمولاي الحسين أفدي كمولاي الحسين مولاي مولاي الحسين ذكر الحسين خير زاد ذاكرين يا فوز قوم ذاكرين شاكرين أبكى مصابه جميع طاهرين فابكوه يا أهل الولاء ظافرين ذكر الحسين خير زاد الزاكي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. Respected Principal Janab Sheikh Kumail Bhai Nadir, Honorable Professor Sir Abbas Husain along with his team member, my diligent staff members and the enthusiastic viewers who are with us live on board. Assalamu alaikum and good morning to all of you.
I warm-heartedly welcome you all to Safia Boys High School, which is an institution accredited under the ownership of Dairat Tarbiyat wa Taaleem and has been honored by the Qudum Mubarak of Three Duat Mutlaqeen, due to which our school's atmosphere has been revolutionized and transformed completely. It has no doubt opened new doors of development and progress under various fields of education. As per Akamola's aspiration, students of SBHS has left no stone unturned in achieving success in various fields like development programs, first in maths, IKLC, ICAT, etc. Also, in the field of robotics, these digital natives have achieved success not only on national level but international as well. Apart from all this, the Huffaz, there are 16 Huffaz so far in SBHS, and we are looking for more Huffaz in this upcoming year, inshallah. When we look through these achievements, I believe it would not have been possible without the diligent and competent staff without our competent and qualified staff whose dedication and zeal is witnessed at its utmost level, imparting both Dini and secular education as per Akamola's vision. Hereby, I would like this opportunity and thank Janab Sheikh Kumail Bhai Nadir for giving us this opportunity to groom and upgrade ourselves with such sessions. Hereby, I would like to welcome Sir Abbas Husain, a renowned trainer and an educationist in Pakistan who has played a vital role in the field of education. He is Director of Teachers Development Center, Karachi, and has received his education and training from universities of Karachi, Manchester, Toronto, Pittsburgh, Louisville, and Chicago. After reaching over 85,000 teachers countrywide with special training programs for school leaders, Sir Abbas Husain claims some clarity about the issues they face. Hereby, I would request Sir Abbas Husain to come on board and further initiate the session. Thank you. Assalamu alaikum. This is a day 11 of our program, but it would be a good idea to give a short recap of the way in which भाई आयत और जो तर्जुमा है उससे आगे वाली स्लाइड ले लो, the third slide. Clicker, sure, okay. Maybe I can do it myself. Yeah. Oh, okay. देखिए तो. पोडियम थोड़ा पीछे.
Right. वो जो है, no, the one after this, engaging teachers, engaging students. That's it. बस इससे ऊपर. A brief apologies for a little hiccup. Technology has its own problems. I'm honored and privileged to be addressing lots of people present and perhaps a very large number absent physically over here, but around whoever it is who's tuned in. Salams to everybody, best wishes, morning, evening, night. We really don't know who is with us, alhamdulillah. I'm grateful to Sheikh Kumail Nadir Sahib for this opportunity and this huge privilege of doing this workshop. The Blended Teaching Excellence course has 3 parts. There are 7 sessions of 2 hours each, which are online. There are 6 sessions of 3 hours each, which are in person. This is the second last of those 6 sessions. Good. And there are some tasks that you have to do on your own time. अब ये अलग बात है कि वो दूसरा वाला टाइम आएगा कब और वो सारी टास्क्स कब होंगी, लेकिन 28 घंटों की टास्क्स हैं जो आपने अपने टाइम में कर. This is blended teaching. This is how teacher training will be now and in the future. So it seems. Inshallah, as things get better, we'll be able to do better things. So this is one module. While I said that the delivery is in 3 modalities, there are also 3 major, if you like, components of the training. All training is actually an aiming for change. So we wish to change ourselves, and normally all change comes down to 3 things: knowledge, skills, attitude. And once again, we can play on the word knowledge itself. Know what, know how, and know why. The word knowledge can be captured in this way. So when I have know what, I'm referring to knowledge. Know what? Well, yes, I know that the sun is so many million miles away from the earth. Okay. I know that the city of Karachi is one of the top 10 mega cities of the world. Know what? These are what we call facts. These are what we call knowledge, information. Yeah, I know. There's a distinction. So that was know what. Then there is know how. For example, skills. I want to improve my language skills. I want to improve my teaching skills. I want to improve how to do a Zoom classroom. I want to improve my technical skills. Those are know how. I know how to do it. So knowledge, I increase my information, my knowledge base, my database, and that we have given ideas for. For skills, we have given ideas for as part of this whole thing today, inshallah, about teaching more things. And lastly, attitudes. Attitudes are more subtle, and it's extremely hard to speak about attitudes. So iski misal aap yun le lein कि attitude is there visible at the end, but is there from the beginning. It's one of those strange things. इसकी मिसाल हम अपनी जिंदगी में यूं लेते हैं कि खाने का असल मकसद उसका जायका है. Agreed? जमनનો અસલ મકસદ છે તેનો ટેસ્ટ, જે સૌથી આખિરમાં ખબર પડશે. પણ જગલા સ્ટેપ જે તમે પહેલા લીધા, યાની પ્યાજ કાપી, પછી મેરિનેટ કીધું, પછી એમાં મસાલો નાખો, પછી તેને મિક્સ કીધું, પછી તેને ઓવનમાં નાખો, પછી તેને આટલા, એ સગલા સ્ટેપ્સ are important. That's your skill. But the whole point of it is the taste. So just as the taste is discovered last but intended first, so is attitude achieved last but intended first. Hello? सगला लोगों जागी रहा है. All right. अभी तो 11 बजे. This is a good time. So, यानी
જેમ જમનના બનાવવાના સગલા સ્ટેપ્સ નો મકસદ જે છે તે ઝાયકો છે, પણ તે પહેલા નથી હોઈ શકતો. એ નિયત છે. એક્ઝેક્ટલી નિયત. ધેટ્સ ધી અધર થિંગ. નિયત સૌથી સટલ, એ કલ્બમાં છે, દિલમાં છે. નિયત દિલમાં છે ને ત્યાં લીધી છે તો તેના બાદ સગલી ચીજો સ્ટેપ 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 થતા જશે. તો એ વાત સાચી છે કે હર નમાઝની પોતાની અલગ નિયત છે, પણ એ નિયત તો બહુ પહેલાથી લઈ લીધી જ્યારથી વઝુ શરૂ કીધી. It's one of those clever things. I won't go more into this. It's very subtle. So attitudes ના માટે અમુક પેરેબલ્સ અને હિકાયત અને વિઝડમ લિટરેચરથી ફાયદો લઈને એ અમુક ચીજો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કીધી, વાંચી, અને એના ઉપર બહુ જરા મને એમ લાગે છે કે જે લોકોએ પણ ભેજું ખર્ચ કીધું એ પેરેબલ્સમાં જ ખર્ચ થયું. સાચી વાત છે? या इंक वाला मसलन. या I loved it. I mean, आप लोगों के मैं रिफ्लेक्शंस में आना शुरू हुए हैं. Just amazing जो इंटरप्रिटेशंस आपने दिए हैं, माशाल्लाह. और मनी, the one we did on money, वो भी बड़ा मजा आया कि what is it, who is actually obsessed, etc., etc. So these are the three components of the course, and these are the three modalities of delivery. And today our engagement, engaging students, engaging teachers is the second. There are 3 sessions on this, 1 online and 2 in person. And this is the first of the in-person sessions, second of the ETES. And we will do 1 more on in person next time we meet, which will be inshallah in March, 5th March, I think. Yeah. We will now meet on the 5th of March. So now you have 2 weeks to catch up on all the close that you need to do, all the TED Talks you need to listen. That's your knowledge. Close you need to do. That's your skill. Listening skill is through that. So you see, there are all these things that you do to improve. And of course, most of all, your attitude, which is your reflection that you do on every class. So this is an overview of the course. I hope the people who are listening and are not totally overwhelmed. That's also one of the problems. When you give too many details, people say, oh, okay, very, very complicated. All right. आइए भाई आज की गुफ्तगू थोड़ी सी शुरू करें कि what our agenda. इसमें हमारा ये भी इंटरप्रेट करेंगे हम थर्ड उस पे if possible, but if majority has not read it, then we will muakhar karo it. We will put it later, inshallah. We will see how that goes. आइए जी, engaging teachers, engaging students, part 2 and session 2. There, the challenge. The challenge. This is a very, very serious thing. Right. Hello. आपका नाम? हुसैन. पढ़िएगा. It is not the weakest students who are the issue, but the best students. इमकिम. ब्रदर पढ़िएगा. It is not the weakest students who are the issue, but the best students. See, we are talking engagement, the engaged child. So, સગલા ટીચર્સને એની ચાહત હોય છે કે જે બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ છે, જે સૌથી વધારે એંગેજ છે, જે હંમેશા હોમવર્ક કરીને આવે છે, જે બધી ચીજ વાંચીને આવે છે, જેને સગળું સમજમાં આવે છે, જે બધા સવાલ ઉઠાવે, જવાબ દે છે સૌથી પહેલા, આપને એના બારામાં બહુ સોચે, બહુ સ્માર્ટ છે ભાઈ, એ બહુ ફાઇન છે. આ તો થયા બેસ્ટ સ્ટુડન્ટની સિફાત. તો ये स्टूडेंट चैलेंज केम छे? Now, this is the other problem. I have been in interviewed very many teachers. Only yesterday I was in Islamabad and I was talking to school leaders and I do lots of things. It's interesting that whenever we are planning, whenever we make a program, we have in mind the best students. हम उनको जहन में रख करके करते कि हाँ, this will be liked by child so and so. He's smart. We think like that. And if we take a class and if the bright child says, sir, please, तमे एम पढ़ाओ या तमे फलां चीज करो and all that, तो जो वोट स्मार्ट बच्चे का है वो जरा भारी होता है. Would you agree?
और जो वीकेस्ट स्टूडेंट है अवल तो वो कभी वोट देते ही नहीं है वो कोई बोलते ही नहीं जी 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 ओके કરી લઈશ તમે એમ કીધું કરવાનું મેં કરી લઈશ ને મને કહું શું કરવાનું છે એમ કરવાનું છે મેં કરી લઈશ now I am now saying engagement के मौजू के मौजू पर जो सबसे सीरियस पॉइंट है वो ये है कि वीकेस्ट स्टूडेंट्स चैलेंज नहीं है बेस्ट स्टूडेंट्स क्या मतलब यू सी ये बेस्ट स्टूडेंट्स है ना पेंडेमिक से कबल के निजाम से कंप्लीटली खुश हैं पेंडेमिक से कबल के तालीमी निजाम से यही वो बच्चे हैं जो फर्स्ट आते हैं they are the best inverted commas best so what do they pressurize us to repeat the same thing before because that is where they were good you now see the whole problem has changed but we should not do what was good for them and reach out to the weakest students as well ये इशू इंसाफ का है जस्टिस का है तो वो शागिर्द वो बच्चे जो पुराने नाकिस निजाम में पनप नहीं रहे थे जिनका कोई वोट नहीं था जिनका कोई राय नहीं थी हमने उनकी भी खिदमत करनी है मुसीबत यह है कि स्मार्ट बच्चे बकबक करके हमारी तवज्जो ले जाते हैं वो हर चीज में हाथ उठाते हैं हमारे भाई मेरे टीचर्स कहते हैं वी ऑल लाइक द साइड ऑफ द ब्रेड दैट इज बटर्ड ऑन वी ऑल लाइक अपने जिन्हें किसी ने अपनी जबान में कहा तर लुकमो समझ में आया तर लुकमो सगला ने गमे છે શું मतलब जे रोटी या डबल रोटी ने जरा जरा प्रोपर कारी चावल ना प्यालाમાં પ્રોપરલી લીધી હોય ये લુકમાં सब कुछ Who doesn't like a smart child? I mean, we know the variables are so many. Parents are educated, घर में पढ़ना लिखाना माहौल छे, माशाल्लाह हालात छे. तो ये बच्चा ने तो we all like such children. But I am now saying, Alhamdulillah, they are good. May they remain good. Not the issue. The issue is they will be good wherever they go. ये फकत अपनी क्लास में फर्स्ट नहीं એ જ્યાં પણ જાશે ફર્સ્ટ આવશે આપનો પ્રોબ્લેમ ये બચ્ચાઓ છે આપનો ચેલેન્જ ये બચ્ચાઓ છે જેને ત્યાં આ માહોલ નથી જેને ત્યાં ગુરબત મુફલિસી હાલાત મસાઇલ રિયાલિટીઝ જેને ત્યાં બે વખતની રોટી ફરાહમ કરવું એમના મા બાપથી ઇંતજામ આટલી મહેનત જેના નતીજામાં બે વખતની રોટી અને સર પર છત ને તન પર કપડા મુમકિન છે તે બચ્ચાઓની વાહિદને એક જ ઉમ્મીદ આપને છે આ ક્લાસ છે આ સ્કૂલ છે કે તેમને કોઈ ચીજ શીખવવામાં આવી જાય કોઈ બીજી જગ્યાથી મળશે નહીં મારી વાત સમજમાં આવી રહેશે Are you seeing the logic I'm giving? Hello. The best students normally drive the class. We shouldn't. Actually, we should take everyone. આ વાતનો એમ મકસદ નથી કે હવે આપણે બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ્સને જ નહીં સામે That is not what I'm talking about justice. I'm talking about इंसाफ કે એક અદલના સાથે एक जस्टिसના સાથે આપણે એ બચ્ચાઓની પણ ખિદમત કરીએ જે ઇન્ટ્રોવર્ટ છે જે ચૂપ છે જે ખામોશ છે જે સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે we need to work out a way engaging teachers engaging students ये चैलेंज है बात पहुंची गई आपने हेलो ऑलराइट मैं 4 लोगों थी सामलीस 6 लोगों थी बेनो વધારે છે तो 4 बहनों सी ने 2 हजरात सी साहिबों सी આ પોઈન્ટની ઉપર આપની શું સોચ છે શું બાઝગશ છે શું લાઈક agreed yeah any comment you want to make on this 4 ladies and 2 gentlemen yes please
कोई भी चार, वरना પછી फिर मैं नाम लेવું शुरू कर दे। जनाब जी हुसैन, बिगिन। गो ऑन हुसैन, वॉल्यूम आपकी लाउड है। सर आजकल एक चीज देखने में आ रही है बच्चों के लिए, जैसा आपने बताया कि बच्चे आजकल बोलते हैं कि हेलो, आजकल बच्चे ये चीज़ बोलते हैं कि सर हमें कोई नई चीज़ सिखाएं, और आपने बिल्कुल सही बात बोली कि बच्चों की हम ही उम्मीद होते हैं जो वो हमसे सीखना चाहते हैं। तो ये चैलेंज को एक और तरीके से मैं देख रहा हूँ आजकल के दौर के अंदर कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आजकल जो भी चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं टीचर से तो उनको मिल रहा है, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा भी ढूंढने की कोशिश करते हैं यूट्यूब से और सारी चीज़ों से। बट एंड में होता क्या है उनके साथ कि वो जब चीज़ें यूट्यूब वगैरह से ढूंढ लेते हैं लेकिन उनको सही प्लेस नहीं मिलती, सही चीज़ नहीं मिलती है। बहुत खूब। तो जिसकी वजह से वो लोग थोड़े से डिसहार्ट हो जाते हैं और फिर अगेन टीचर्स को वो बोलते हैं कि सर हमें ऐसी चीज सिखाओ जो दुनिया चल रही है, जो दुनिया में सब चीजें दिखा रही है, हम ऐसी चीज। सर हर किसी की एक ख्वाहिशा होती है, बच्चों की, आजकल के स्मार्ट बच्चे हैं तो वो ये चीज मांग रहे होते हैं। तो एज अ टीचर हमें उनको ऐसी चीजें सिखानी चाहिए जो अपकमिंग फ्यूचर्स के अंदर उनके लिए बेनिफिशियल हो। Fine, agreed. नहीं, बीजी बात है कि पर पहला आप you hit upon a big issue. I'll come to that. जनाब पीछे जी, बिन जी, go on. Sir, my name is Husaina Murza and I'm the nursery teacher in Safia Boys School. Sir, मैं according to nursery students बात करना चाहूँगी कि जैसे nursery में formation of letters होती है। अब sharp students हमेशा 15 to 20 minutes में formation करके बैठ जाते हैं easily. So the other students are ignored कि वो कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम नए लेटर को शुरू करें। तो दूसरे बच्चे हमेशा इग्नोर हो जाते हैं और वो क्लास में ओपन अप नहीं होते और वो टीचर्स के पास ही नहीं आते कि टीचर हमें रिस्पॉन्स नहीं करेगी। एंड व्हेन वी टॉक टू देयर पेरेंट्स तो उनके पेरेंट्स हमें बताते हैं कि वो घर में तो कर रहे हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि वो क्लास में जब हम शार्प स्टूडेंट्स को फोकस करते हैं, वीक स्टूडेंट्स को इग्नोर करते हैं, तो एक क्लास में ओपन अप नहीं होते और वो घर के अंदर जाके सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि टीचर्स ही कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं क्लास। क्या बात, बड़ी ऑनेस्ट बात कही आप, माशाल्लाह। Yes, please. Next. I'll pick up on this in a moment. Yeah. Assalamu alaikum. Sir, I would like to add here that in the previous classes you said that group work, teamwork is very important. So I was just thinking that best students, like you said, remain best wherever they go. So why not use the potential of the best students to help out the weak students? Exactly. So- Yes. Thank you. Thank you. ये अगली क्लास में गुजर चुका है जिक्र, the 3 C's. याद है? Connect, connect, cooperate, collaborate. Right. Excellent. And that is at the level of the staff, and this is at the level of the students. MashaAllah. Perfect. Very good. Yes. 2. Yes, please. Assalamu alaikum. Welcome. Sir, my name is Ms. Sakina, and keeping this thought about that the best students are more challenging, in our school we have the seating arrangement done in such a way that they sit housewise in teams. And this is very positive by, the best students are actually helping the weaker ones themselves. बहुत खूब, ठीक है, माशाल्लाह. Thank you. That is 3, 4. Yeah, sure. Please. हाँ, आप इवन आप इधर जी आ गया यहाँ. Janab. My name is Murtaza. Murtaza. Sometimes what happens, sir, that there are different subjects. Especially in our school, there is madrasa and there is also the other subjects. Janab. तो क्या होता है कि बास जो वर्जन जो होते हैं वो किसी सब्जेक्ट में बहुत स्मार्ट होते हैं और किसी सब्जेक्ट में वो वीक होते हैं. Janab. स्पेशली हम देखते हैं कि उसको अगर इधर दिनियात की तरफ ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है तो वो यहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उधर कम लेते हैं. और बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं जो, तो हम क्या कर सकते हैं, जो अभी एक टीचर ने बात कही कि अगर दिनियात के अंदर कोई स्टूडेंट अच्छा है और उसमें कमज़ोर है तो इस बच्चे को उसके साथ थोड़ा लाइजन करके इस तरह. बहुत खूब. लेकिन सर एक प्रॉब्लम जो मेरे जहन में कि बाज़ वक़्त
बाज दफा क्या होता है कि बच्चे किसी सब्जेक्ट को इग्नोर एज ए ऐसा चला, थोड़ा बिल्कुल। टाइप का कुछ होता है कि वो इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते और फिर उसको इग्नोर करते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है। तो एक ये प्रॉब्लम भी एक थोड़ा श्योर या मुर्तजा जनाब। सर हमने भी अभी ये प्रैक्टिस की हुई है कि जैसे कमज़ोर बच्चे हैं वो तो स्कूल में होते ही हैं क्लास के अंदर कि 20 बच्चे हैं तो 15 बच्चे अच्छे हैं और 5, तो ये ख़ास स्पेशल जो हम हिफ्ज़ करवाते हैं उसके अंदर हमने ये प्रैक्टिस की है और वो बहुत कामयाब भी रही है माशाल्लाह। ये जो भाई बनाते हैं हम उसको भाई, वाह, तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारी रही। एक्सलेंट, वाह। Yes, Assalamu alaikum, sir. जनाब Sir, सर, I would like to my take on this is, sir, best students, as Elficon says, that by all means have pet, but don't let the pet know it. So the real challenge turns into detrimental nature or approach when there is discrimination in a teacher's mind. Correct. Okay, this is the best one, this is the weakest student. And I think that once a teacher gets rid of that stereotype mentality, then there would be no discrimination at all. The weakest student would be considered and approached as the best one, and that would make him the best of the best. माशाल्लाह, माशाल्लाह। ओके शेख साहब, यस। हाँ भाई, लेडीज में थी एक वॉइस और एंड देन आई विल मूव ऑन। आई सेड 4 एंड जेंटलमैन, या वंडरफुल। Yes, please. Somebody would like to. Yes, these are very, very serious. I'll give suggestions and master. Right. Jana, Pichu. Assalamu alaikum. Sir, sometimes it's happened that smart students. Your name, please. Tasneem Murtaza. I am Tasneem Murtaza. Sometimes it's happened that we need to plan something special for the best students. Allah. Because they are the one who do the things quickly. Just do it quickly, yes. So we have to plan something else for them too. So they are more challenging sometimes. But okay. Now you're talking about serving the best students and not punishing them for being the best. Because you want to pay attention to the weak one. These are time allocation. Excellent. These are big issues. Right. Let me quickly comment on all the points. Mashallah. All these are, to me, they are reflecting, they are showing me that I'm talking to a group of people who actually seriously and sincerely want to teach the best that they have. ये एक आप लोगों के नाम तारीफ है, वो सब मैं बाद में कहने वाला था, चलो तुम लोगों ने अभी सुने। Fine. हुसैन भाई की पॉइंट थी अबाउट द लेटेस्ट। अग्रीड, ये बात तो सही है कि बच्चों को जो चीज जाजुबियत के साथ अट्रैक्ट करती है वो वीडियोस हैं, फिल्म्स हैं, ऑल दैट। राइट। हुसैन भाई, बस वो तो है कि टीचर को वो चाहते हैं कि हमारा टीचर भी अप टू डेट रहे। वो जो एक जुमला है कि आज 21वीं सदी के बच्चे 20वीं सदी के एडल्ट से 19वीं सदी के क्लासरूम में 18वीं सदी का कोर्स पढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली 21वीं सदी के बच्चों को 20वीं सदी का उस्ताद 19वीं सदी के बने हुए क्लासरूम डिजाइन के एतबार से 18वीं सदी का सिलेबस पढ़ा रहा है। तो हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो, हाउएवर, एक बहुत ही पावरफुल बट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट, एक है नॉलेज बिफोर द आई, एक है नॉलेज बिहाइंड द आई। एक तसव्वुर लें, गौर करें। आज अगर मुझसे आप ये कहें कि सर तुम्हारी रीडिंग स्पीड सगली घनी अच्छी छे, या बट दैट इज बिकॉज ये स्पीड उन्हीं बुक्स के बारे में है जिसकी नॉलेज बिहाइंड द आई मेरे पास वाफिर है, यानी मेरे शौक के सब्जेक्ट्स हैं। एजुकेशन है, फिलॉसफी है,
साइकोलॉजी है, खूब पढ़ रखा है, लिहाजा बहुत सारा इल्म मेरे माइंड में, आंख के पीछे यानी कि ब्रेन में, वेरी क्लेवर। अगर वो ज्यादा है, पीछे बैकग्राउंड नॉलेज आपकी है और आप आगे किताब को पढ़ रहे हैं, तो यू विल गो वेरी फास्ट, बिकॉज बहुत सारा पहचानते जाएंगे और उसको स्किप करते हुए जाएंगे, जो नई बात होगी वो आप देखेंगे। दैट्स हाउ स्पीड वर्क्स। लेकिन अगर मुझे आपने एक ऐसे मौजू पर किताब दी जिसमें नॉलेज बिफोर द आई इज मोर एंड नॉलेज बिहाइंड द आई इज लेस, मसलन आई डोंट नो एवरीथिंग, aeronautical engineering, I don't know anything. Now if you give me a book to read on aeronautical engineering, I won't be able to read it fast because I have to grasp the concepts and I'll be extremely slow because now the knowledge is going, I'm building it. But someone might, hello, acha aim acha this is acha now you know acha अच्छी सी बात। You see, जिस चीज को हम रीडिंग में बोरियत की बात करते हैं उसकी मसला ही यह है कि नॉलेज बिहाइंड द आई कम है। हमें यह समझ नहीं आ रही कि नॉलेज जो बिफोर द आई है, इन फ्रंट, उसको उधर तक मुंतकिल कैसे करें। उसके लिए जिस किस्म का ज़र्फ चाहिए, खुला दिल चाहिए, एक एहतियात चाहिए कि हाँ, आई विल बी कंफ्यूज्ड, इट विल बी कंफ्यूजिंग इन द बिगिनिंग, बट आई हैव टू टेक इट अंटिल इट मेक्स सेंस। That is how knowledge works, नहीं? हुसैन बहुत जल्दी से यस सर कह दिया, हालांकि ये कैफियत उन पे थोड़े दिन पहले गुजरी है। जोक। All right. So the thing is, today children are exposed to lots of knowledge, which is coming at them in visual ways. Now, while that is a good thing, it is not the best thing. When I'm reading words, I'm forming images in my mind depending on the author, the way the writer describes. I am building words in my mind, and that is an act of imagination, and that keeps me focused on the book. But when I'm watching a YouTube film, all the effort has been already done by the director and the maker of the film, the video. So now I have to do no effort, only let it come to me. And that is why the knowledge that I have through a YouTube film is contemporaneous, whereas the knowledge I have through a book is cumulative. थोड़ी और अंग्रेजी आ गई. Okay, let me pause here for a moment. मैं एक एग्जाम्पल है और महफिलों में भी देता रहूं. अगर मैं एक किताब पढ़ता हूं तो मैं अगली किताब पढ़ने के लिए आसानियां हो जाती, और हर किताब जो मैं पढ़ता जाता हूं वो अगली किताब के लिए मेरे बिहेवियर को, आंखों को, मोशन को, माइंड को तैयार करती है, और हर पिछली किताब नई किताब में से मानी अखज़ करने में मेरी मदद करती है. यह है क्यूमुलेटिव. लेकिन अगर आप टीवी पर, और मैं बहुत ही अदना बचपन वाली मिसाल दे दूं, पपाई द सेलर का कार्टून देखते हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल जिंदगी में पहली बार पपाई द सेलर का कार्टून देखा, एक कार्टून, फिर आपने एक और देखा, फिर आपने एक और देखा, आपने एक और देखा, आप 200 कार्टून भी देख रहे हैं, आप वैसे ही रहेंगे जैसे कि आप थे. किताब के नतीजे में मेरी जात में तब्दीली आती है, इमेजेस देखने से मेरी जात में तब्दीली नहीं है. थिंक अबाउट दिस. सो व्हाइल पीपल क्लेम कि उनके में बड़ा इल्म में इजाफा हो गया, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री देख ली, जी जी जी, आपसे हम पूछेंगे एक हफ्ते के बाद, और पता चला हाँ कुछ था, नहीं सर वो फिल्म देखा, पता नहीं क्या नाम था, वो कुछ था. Then they talk like this. But when you've read something, एक हफ्ते बाद जब पूछा तो they knew much more. Nobody knows 100%. Okay, some people do. I mean, ishara. But some people. So the point is कि जब हम ये समझते हैं कि ये knowledge के साथ हम
वीडियोस और फिल्म के जरिए देखें, किताबों में भी तस्वीरें होती हैं, हम तस्वीर के खिलाफ नहीं है, अंडरस्टैंड दिस, लेकिन तस्वीर में और तसव्वुर में फर्क है। तसव्वुर वो है जो मैं खुद अपना करता हूं इमेजिनेशन से, तो वो जब कैपेसिटी मेरी कम से कम होती जाएगी तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि लोगों का बना बनाया, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खाना जितना भी लजीज हो खुद ही चबाना पड़ता है, अपने ही हाजमे के निजाम से गुजरता है, अपने ही सिस्टम है, हर इंसान ने अपना अपना करना है। ये क्या है? प्री डाइजेस्टेड नॉलेज। तो कितनी देर तक आप बच्चा शीरखार हो या नौनिहाल, दोनों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है फेरेक्स। तो कब तक इल्मी फेरेक्स के ऊपर तुम जियोगे? अब तो बड़े हो गए हो, यू सी द प्रॉब्लम। अब तुम्हारी ग़िज़ा के अंदर में चबाने वाली चीजें, नट्स एंड आमंड्स एंड walnuts and other, when the true food comes which you need to chew, you all want it easy. This is the way children are becoming easier and easier. This is the problem. It's a very serious problem, and I'm not going to say हाँ बस यूं ऐसे ही कर ले, इतना आसान नहीं है. I have deliberated and given you some new metaphors to think about. बात समझ आई आपको? हेलो. तो एक कॉन्सेप्ट और लिख लें, AVK, एक मुखफ़फ़ लिख लें, AVK. ये है अडल्ट वैलिडेटेड नॉलेज, AVK, अडल्ट वैलिडेटेड नॉलेज. जो हुसैन भाई ने बात की वो बिल्कुल सही है कि बच्चे YouTube पे इधर उधर से बिट्स लेते आते हैं, फिर जब वो टीचर से रजू करते हैं तो उन्हें चाहिए कि एक अडल्ट वैलिडेट कर दे उस इल्म, उस पे तस्दीक की मोहर लगा दे. And that is now what our duty is. Our duty is not to provide knowledge. Our duty is to validate it. Valid adult knowledge, validated adult knowledge की फुरकान के ऊपर तस्दीक के ऊपर मोहर लगाना अब टीचर्स का काम ये हो गया है. It is hard. लेकिन अब नॉलेज देना, पहले ये था कि हमने दोनों काम करने होते थे, हमें नॉलेज देनी भी होती थी और उन जो जितना अखज किया उसके ऊपर निशान भी लगाना था कि हाँ ठीक तमें ठीक समझा. लेकिन अब बच्चों के पास क्योंकि नॉलेज के सोर्सेज बहुत सारे हो गए हैं, विकिपीडिया है, वो है, वी नो, बहुत कुछ खुराफात भी है, नॉनसेंस भी है, फजूल चीजें भी, उसमें सही चीज के पहचानने का काम अब टीचर की. तो ये शुक्रिया है हुसैन को कि उन्होंने ऐसी बात पे छेड़ दिया कि हमने इतनी सारी काम की बातें बता दी. तो AVK याद रहेगा. हेलो. So our duty has changed. We are not providers of knowledge, at least not all the time. We do provide knowledge, but then we also validate what is worthy knowledge rather than nonsense. And there is a lot of nonsense on the. अच्छा भाई, बाकी मैंने हाउसवाइफ्स की बात सुनी और ओके. ये जो पॉइंट है अबाउट इग्नोरिंग अ सब्जेक्ट, वो एक सब्जेक्ट का हमारे अजीज ने कहा कि सर हम मदरसा दुनियावी इल्म देते हैं, उसके अंदर में बच्चों की अपनी रग़बतें इधर उधर होती हैं, इसमें स्ट्रांग होता है तो उसकी लगाव उसमें होता है. एग्जैक्टली. तो इसके हवाले से दो तीन सिंपल सी बातें, प्लीज लिसन. मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी से आप सब वाकिफ हैं, आप सब जानते हैं. ऑलराइट फाइन, प्लीज लिसन. ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो अब्बा है, बाबा जिसने ये दिया है, जॉन हावर्ड गार्डनर. प्लीज अंडरस्टैंड कि हावर्ड गार्डनर हयात हैं, ओके. ही इज अराउंड. हावर्ड गार्डनर ही की बात सुन लें. बिफोर द एज ऑफ 11 डोंट वरी अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंस. 11 साल से छोटे किसी भी बच्चे के ऊपर मल्टीपल इंटेलिजेंस की पूरी अपना इल्म अपने पास ही रखें और बच्चे को कंप्लीट तजुर्बात का स्पेक्ट्रम दें. डू नॉट से कि अच्छा आ बच्चा ने मैथ्स जरा मुश्किल आगे तो तेनी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस વધુ છે ને लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस घट છે, चलो वांधो नहीं मैं એને वर्बल लिंग्विस्टिक વધારે આપી. डोंट डू दिस. से विद पेशेंस, नहीं बेटा तुम ये कर सकते हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन ही मस्ट डू एवरीथिंग.
Before the age of 11, don't talk about multiple intelligence at all. I know बहुत सारे लोग वर्कशॉप्स में जाते हैं और अपना माथा बहुत खराब करते हैं. I know. बट यही तो मसला है सारा वो हमारे दौर में सब. और बाय द वे और गुफ्तगू में शायद मैं पहले भी कह चुका हूं, लर्निंग स्टाइल्स का एक बहुत ही फेक मौजू चल पड़ा है. लर्निंग स्टाइल्स कि दिस चाइल्ड इज अ विजुअल लर्नर, दिस चाइल्ड इज एन ऑडिटरी लर्नर, दिस चाइल्ड इज अ किनेसिक. या you heard this. Please understand this, friends. Recent research has shown that the basis on which this theory was based is fake. There's something wrong with the experiments. शुरू वाले जैसे ये थियरी आई है तो अब दुनिया भर में इसको तर्क कर रहे हैं. People are leaving it. But unfortunately ये खबर हमारे मुल्क में नहीं पहुंची अभी पूरी तरह से. सो हमारे यहाँ अभी भी जगह पर बड़े सोम से लोग वर्कशॉप्स करते हैं, अपने आप को डिफाइन करते हैं, फिल्में देखते हैं. नहीं, मैं तो विजुअल लर्नर हूं ना, मुझे लिखत पढ़त की बातें ना करें. मैं तो सॉरी फ्रेंड्स, ये लेजीनेस की और काहिली की मिसाल है. डोंट डू इट. डोंट गेट मी रॉन्ग, मल्टीपल इंटेलिजेंस बिल्कुल ठीक है. मैं लर्निंग स्टाइल से खिलाफ बोल रहा हूं जिसमें ओवरलैपिंग अल्फाज आते हैं, इसलिए वी आर कंफ्यूज. बात समझ आ रही है आपको? हेलो, ऑलराइट. एक कमेंट और कर डालूं अबाउट दिस थिंग ऑन द डिस्क्रिमिनेशन. शेख साहब ने बात की. एक एक्सरसाइज हमने दुनिया में एक टीचर को करते हुए, आई रेड अबाउट दिस और आई वाज वेरी इंस्पायर्ड. एक टीचर ने कहा, जब मेरे पास पहली बार बच्चे आते नई क्लास, तो रजिस्टर में सबके नाम लिखे हुए होते हैं कि भाई ये बच्चे हैं क्लास 5, क्लास 6. तो वो कहती है, मैं जब अटेंडेंस लेती हूं, अब ये देखो बिल्कुल पहला दिन है, बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम. एंड ऐसा होता है जॉब में, हम नए लोग आते हैं, नई जगह आते हैं, क्लास पूरी नहीं होती है, फर्स्ट टाइम. अब हमें बुझा मुझे साल भर पढ़ाना है, अब पहला दिन है. एक टीचर का वतीरा हमने सुना, आई लव्ड इट. ऐसे वाह. वो ये कहती हैं कि जब मैं बच्चों के अटेंडेंस लेती हूं तो एक एक बच्चे से पहले दिन मैं नाम पुकारती हूं और क्लास में देखती हूं कि चेहरा और नाम को मैं मैच कर. तो नाम बुलाया, मुर्तजा, थैंक यू. सकीना, अच्छा आप सकीना, ऑलराइट फाइन. हुसैन, अच्छा आप हैं हुसैन. ओके. करते 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 अटेंडेंस लग गई, प्रेजेंट लग गई सबकी, खत्म, रजिस्टर पर. वो कहती हैं कि मैं वो रजिस्टर घर ले जाती हूं और रात खाने के बाद मैं रजिस्टर दोबारा खोलती घर में, और फिर मैं देखती हूं अपने नोट्स पेपर के साथ किसकी शक्ल मुझे याद है और क्यों, और किसकी मुझे नहीं. isn't that brilliant? कहती है अगले, मैं उन सब के नाम के आगे डॉट डाल देती हूं पेंसिल का, ठक ठक, कि इन बच्चों को नाम और चेहरा देखने के बावजूद मेरे सहन से होगे ना ओझल. प्लीज अंडरस्टैंड, दीज आर साइकोलॉजिकल रियलिटीज. ये सब सही है. लेकिन नेक्स्ट डे वो कहती क्लास में जब मैं दोबारा नाम वाली बात करती हूं, एक बार फिर नाम के साथ चेहरा मैच करती हूं और खुद अपने आप को नोट देती हूं कि इनका बिलखुसूस, तो फिर वो 5 तस्नीम आती हैं. जोक. और फिर एक रशीदा बहन होती हैं जो एब्सेंट होती हैं खटाक से, तो फौरन ही हमने कहा, लो तुम्हारी एब्सेंट मार्क्स. सर मैं तो एक क्लास में थे, मैं कहूँ ये क्लास में तुम्हारी एब्सेंट. हेलो, डू यू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेटजी? इट्स एन एक्सेलेंट. देखिए हैरी वॉन्ग जो है, बड़ा आदमी है, बड़ा नाम है. ये वाली आपने अल्फी वो जो बात बताई, डोंट बाय ऑल मीन्स हैव पेट्स बट डोंट लेट द पेट्स नो इट. ये जो है कि कुछ बच्चे आपको अजीज होंगे, बस उन्हें पता नहीं चलना चाहिए. ये बड़ा जब्त का काम. आपकी बॉडी लैंग्वेज रिवील कर देती है कि कुछ लोग आपको अजीज हैं, कुछ नहीं है. ये नफ्सियाती बात है, इसके ये ह्यूमन नेचर है. लेकिन आप क्लासरूम में लागनी की खातिर नहीं गए, इंसाफ की खातिर. सो यू शुड बैलेंस. ठीक है जी, ऑलराइट. तो ये रजिस्टर का हमने एक इजाफी बात कर डाली कि दीज आर द काइंड्स ऑफ डिसिप्लिन्स we need to put upon ourselves and make sure that we serve all the children. All right जी. थैंक यू. ये रियलिटी और ये चीज, अब मैं एक और आवाज, वन ऑफ माय टीचर्स,
Yes, we will turn to this. आइए भाई एक वीडियो देखी जाएगी अभी, and we are going to listen to hardly 3 minutes. This is John Hattie. Now John Hattie मतलब फारिग आदमी है, मतलब कोई काम है नहीं इसको, तो ऑस्ट्रेलिया से इनको कोई बहुत बड़ी टीचर्स कॉन्फ्रेंस में पैंडेमिक के बाद के दिनों में इनको वहां बुलाया गया. तो उन्होंने एक स्पीच दी. अब YouTube की दुनिया में क्या मुमकिन नहीं देखें, क्या खुशकिस्मती that we are able to listen to the speech that an Australian professor gave in Northern Ireland, and we are here sitting in Karachi, and माशाल्लाह नजदीक और दूर के लोग अभी इसको देख रहे हैं. This is truly ये कमालात हैं. We appreciate. जो बात सही है वो सही. Let us listen to John Hattie saying something else. और यही best students, worst students का जो issue है वो भी जवाब देंगे और ये वजह बताएंगे कि क्यों मसला है. Listen carefully. अब हमने जितनी बात की वो सब सही है, लेकिन अब एक मुफक्किर को सुने, ये इनका अपना एक मुशाहिदा, वो बहुत गहरी बात है. ठीक है जी, हेलो. तो दरमियान में वो एक लफ्ज बोलेंगे, सो नॉर्दर्न आइलैंड, जो जिनसे वो मुखातब हैं, नॉर्दर्न आइलैंड की कॉन्फ्रेंस है, तो वो कह रहा है सो नॉर्दर्न आइलैंड, बस आप उसकी जगह अपने मुल्क का नाम डाल दीजिएगा. You know, oh people of Pakistan and whatever country, it's you, your children. ठीक है जी. लीजिएगा भाई, यह साथ लगी हुई है, embedded है, please play it. ये हैं जॉन हैटी. राइट, लीजिएगा भाई. While there are many negatives about the current COVID crisis, indeed for the future of schooling in Northern Ireland, COVID can also be a golden ticket. Along with new decade, new directions, there is a chance to keep the best of our current schooling model, but have the courage to learn from what's working well in COVID to embrace a new syntax of learning. The current grammar of schooling works well for many, but far from all, and this means every year we leave too many children behind. We talk a lot as teachers. We ask between 150 to 250 questions a day, requiring less than 3 words response. We focus 90% of our talk and the work we ask kids to do on the facts, and we ask them to do, and in many instances, there is little learning in this doing. We sort, group, differentiate, track, segregate, exam, assess, label. We slice and dice the curriculum. We assume every child needs everything in the Northern Ireland curriculum in prescribed stages, and we pack in more every time we tinker towards utopia via the curriculum. And there's a conspiracy. Students above average want more teacher talk, more teacher questions, more doing, more facts, as they know how to play this game very well. We thus leave so many behind, and we fail to teach all to have the skills to become their own teachers and go deeper in their learning. Along comes COVID. We find those students who know how to be their own teachers, who have been taught self-regulation, are the winners. We find those most dependent on the teacher are not so successful at home as they are compliant in class. Under online learning, teachers move from talking to triage. They listen to what students know and don't know, and stop assuming all kids need their lessons and their talking. We hear parents moving from being the homework police and asking, is my precious above average and showing good behaviour, to hearing and appreciating the language of learning, the beautiful delight and the messiness of learning, the importance of failure and not knowing as the best friends of learners. And they quickly come to esteem teachers who have these expertise of inspiring, engaging, motivating and teaching their kids. We have the chance of a revolution. Despite many saying we need to evolve slowly, we cannot change. We have seen the system of schooling change overnight. We have seen that educators have remarkable, powerful and highly desired skills. We have seen educators lead the change to this new model. And we're building evidence from this change to modify and improve the school system. This may be a once-in-a-generation opportunity to bring back better. Northern Ireland, take the golden ticket and truly develop
a new syntax of schooling. While there are हाँ जी, इन्होंने एक रीजन दी why the best students are a problem. Any why are they a problem? Yes, the best students actually want more teacher talk. यानी वो बच्चे जो जी हुजूरी में थे, महकूम थे, आप मुझे बताएं ना क्या करना है, मैं कर दूंगा. अचानक जब उनके अपने सर पर बात आई, अपना सेल्फ रेगुलेशन करना पड़ा कि घर में ही है, कहीं जाना नहीं है, तुम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो कि नहीं, तुम अपनी दिलचस्पियों को और दिलकशियों को छुटकारा पा सकते हो कि नहीं, ताकि मुश्किल काम कर लो, यानी कि अलजबरा. Are you able to find, कोई कहने वाला नहीं है, are you able to direct yourself, are you able to. तो जो बच्चे ये कर सकते थे, ये वो नहीं थे जो कहते थे नहीं ना हुक्म की तामील करता हूं, हुक्म देने वाला नहीं रहा तो मैं हुक्म करूंगा ही नहीं कुछ. तो अब वो बेस्ट बच्चा नहीं रहा, वो एक्चुअली देखने जाए तो इज द वर्स्ट. वो तो टीचर डिपेंडेंट है. जब जिंदगी से जब टीचर बाहर गया तो इल्म और की ख्वाहिश भी खत्म. इट मींस तुम कभी थे ही नहीं इल्म के रास्ते. जब तुम समझते हो कि इम्तिहान की खातिर ही मैं पढ़ूंगा, मार्क्स की खातिर मैं पढ़ूंगा, क्या तय हुआ? तुम्हें मार्क्स मिल गए, इम्तिहान दे दिए, हवे में कभी बुकने में जोज नहीं, मारा छुटकारो थे गयो. एंड देन सडनली अब्बास भाई आते हैं पता नहीं कहां से और वो अजीब अजीब बातें करते हैं कि बाबा वो बुक्स ही हैं जो हैं, जितनी चाहे वीडियोस देख लो, जो चीज जहन में नॉलेज बिफोर द आई जिस तरह जाएगी वो वीडियो के जरिए नहीं जाएगी. इट्स अ डिफरेंट मोडालिटी, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग एंड अ नॉट सो सिंपल. सो इन्होंने कुछ गोल्डन वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है कि पूरी दुनिया में निजाम को बंद करके दोबारा रीस्टार्ट करने का चांस है. बताइए क्या आला बात है. अब अगर हम फिर भी पुराने निजाम की चीजों की तरफ पलट रहे हैं तो हमने बच्चों से भी ज्यादती की, अपने आप से भी. यकीनन अच्छी बातें जो पिछले सिस्टम की वो रहने दे, ये कब बहस कर. पर बहुत सारी फजूल बातें उनसे हम चुके. राइट, हेलो, राइट. I don't see a clock actually. Is there a clock here? There it is. Yes. We shift to, आइए engaging, हमने बहुत सारी engagement कर डाली. आइए अब हम जरा आपको engage किया जाए. आइए भाई, we have one, then we will have the tea break. आइए फटाफट. two people, all pairs. लोग pairs में बैठेंगे. देखें जी, दो लोग, सब लोगों को एक डबल पेज में लगे. इधर देखो, अभी झांकने की नहीं हो रही. हेलो, ऑलराइट, एक मिनट. सब लोगों के हाथ में जब पेपर आ जाए तब मैं अगली बात करूं. दो लोग पेयर्स में, बेशक कुर्सी आपने एक दूसरे के लिए लिखना भी है तो थोड़े से जगह करना चाहें, थोड़ा सा फासला कर लें तब भी ठीक है. उस तरफ हो जाएं और थोड़े से दो लोग. ऑलराइट, हाँ जी भाई, इधर भी दें हजरात को भी. हाँ, गिव इट. हाँ, एक इंग्लिश एक उर्दू एक इंग्लिश, इस तरह से रैंडम दे दें, बस फर्क होना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी डिफरेंट. ठीक है ना.
One paper will be given to two. Acha, if there is an odd number, then my team member will do it with you. Hello? Shabash. Abhinay. These are different. Yes. आप दो लोग हो जाएं या अच्छा शेख साहब, अरे वाह वाह जबरदस्त. So is there I know rooms, जब कभी भी ऐसी एक्टिविटी कराओगे ना, एक मिनट लोग प्राइम नंबर्स में बैठे होते हैं, कोई नंबर ही नहीं लेकिन आज मैं देख रहा हूँ डिविजिबल बाय 2 लोग बैठे हुए हैं. ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट. दो लोग सबके पास आ गया. हेलो. अच्छा, तय हो गया क्या? अच्छा ना, हेलो. जब आपके पास ये आ गया, व्हाट यू नीड टू डू इज सेपरेट. ठीक है जी. अब 2 पेज हो गए. लिसन. इनकिम. हेलो. अच्छा, you want to change the language? Okay, that's fine. English, Urdu, जो it doesn't matter actually. Both are okay. शेख साहब को इंग्लिश वाला मिल गया? नहीं, दोनों. All right, fine. Take one. You will do only one. हाँ. All right. नहीं वो मास्टर सर, हमना मास्टर कॉपी नहीं बात ना करो, ये तो फाइल माटे आपसो. हमना तो एक्टिविटी माटे एक पेपर को. लिसन सकीना. हेलो. 2 ये स्टेपल किया हुआ था, मैंने अलग कर दिया. ओ अच्छा, ये आमीन. अच्छा जी, एक मिनट पढ़ना मन शुरू कर दें. हेलो. Stop. I know. See, this is also an occupational hazard. If you give the handout before, everyone is looking at the handout. Then you keep giving hidayat, and they are not listening, and they are Sukaiche, Sukarvanche. Acha im. And then the teacher loses her temper and says, Sara bata diya. So remember this. I have shown you by demonstration what you should not do by doing it, so that you understand. It's okay. अच्छा जी, जो गेम जो है वो ये कि आप आपस में तय कर लो, जिसके पास अलिफ या उर्दू अगर है तो अलिफ बे, या इंग्लिश है तो ए बी. ठीक है ना? एक के पास ए है, एक के पास बी. अच्छा, अब यहाँ क्योंकि मेरे पास अब आप देखिए, गौर से देखिए, सब बहुत एहतमाम से किया गया. हेलो. इंग्लिश में भी यही हिदायत है, उर्दू में भी इट्स द सेम. अलिफ या ए वाले पेज पर पहली सतर पे कुछ लिखा हुआ है, और वही एग्जैक्ट सतर बे वाले पेज पर नहीं लिखी. तो म्यूचुअल डिक्टेशन. नाउ यू सी व्हाट विल हैपन. पर्सन ए ने पर्सन बी को पहली सतर डिक्टेट कर दी, जो वो लिखेंगे. जैसे ही वो लिख चुकेंगे, पर्सन बी के पास दूसरी सतर है, जो वो डिक्टेट करेंगे पर्सन ए को, जहां पर के जगह खाली छोड़ी गई है. हेलो, बात समझ आ गई? हेलो. ऑल्टरनेटिव लाइंस बिगिनिंग विथ ए. सो नाउ जरा खुदा ना वास्ते प्लीज, जे सतर जे लाइन में छे ત્યાં જ લખવાની છે. તમે એમ તેમ કરશો ઊંધું પૂંધું થઈ જશે, પછી મેં તમારાથી હેન્ડઆઉટ લઈ બીજો આપીશ. Alright, fine. Alif, Be, A, B. Person A begins with the first line. Person B writes in the space which is above the first line, because that is the line missing. Then person B dictates the second line, third line, fourth line, आगे पीछे. Get on with it. Do it.
हाँ जी. Those who have finished are welcome to check each other's by looking at the whole text. Thank you. नहीं, I'm fine. अच्छा जी. Right. Finished? Done? All right. Done? Done? Everyone? Done? So, आइए जी. आपके ख्याल में क्या, what is the learning point of this? What is the point of this? नहीं, Allah Fatiha. Great. Of course engaging. Language skills के, हाँ, Yakuta. Reading and listening. Wait. Reading. Listening. Writing. Speaking. Listening, speaking, reading, writing. यही तो 4 काम करने के थे. यही तो 4 काम करने को हैं. हम लोग सब मसरूफ हैं किसी और काम में. ये 4 स्किल्स हमने कर डाले. नाउ हमारा ताहयात जिहाद है लाताल्लुक जुमलों से. आप ग्रामर की किताब उठाएं तो उसमें आपको लाताल्लुक जुमले मिलते हैं किलो के हिसाब से. और वो सारी एक्सरसाइजेज हैं what are called verbal gymnastics. यानी they are all exercises of form. Change the following sentences into the negative. हमें याद है हमारी स्कूल में हमारे टीचर ने कहा कि ये जुमले हैं, इनके अंदर में not, no या nothing डाल के इन्हीं जुमलों का सेम मीनिंग रखो. Change the following sentences into the negative without changing the meaning. Can you imagine anything more silly? But we did it. तो मसलन जुमला है अकबर was a good king. तो अब हमने लिखना होगा अकबर was not a bad king. Okay. Absolutely silly. यानी अकबर was a good king. तो अब मुझे not, no या nothing को जुमले में लाना है. तो अकबर was not a bad king. जाहिर है वो गुड का मैं तभी तो सेम मीनिंग होगा ना, वरना तो मैं कह रहा हूं अकबर was not a good king, तो वो तो फिर गड़बड़ हो गई, बात उलट हो गई. यानी इस किस्म की लग फजूल इररेलेवेंट चीजें की. बाय द वे हमारे टीचर इसी बात पे एक छोटा सा, अब यू कैन इमेजिन, मैं अपने स्कूल के जमाने की बात करूं, लॉन्ग टाइम अगो, टीचर ने कहा कि अब मैं तुम लोग सबको एक जुमला देता हूं, जो मुझे ये कर देगा उसको मैं प्राइज दूंगा.
तो इस बात का कोई प्राइस नहीं है कि आपसे मैं पूछूं कौन ले गया होगा प्राइस। टीचर ने कहा आई एम नाउ गोइंग टू गिव यू अ सेंटेंस एंड द सेंटेंस इज दिस इज अ टेबल। इसको नेगेटिव करो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। दिस इज अ टेबल। No, this is not a chair. Exactly, everyone says that. But that is not the opposite of this is a table. देखिए एक मिनट. You can say this is not a chair, but I can say this is also not a chair. This is also not a chair. So you are out. तो वो सही जवाब नहीं. This is not a spreadsheet, but how is that? This is not a table. See, table, ये वाला table. See. I agree. But now you see the problem? Hundreds of things are not spreadsheets, which are also not tables. No, that's the opposite. You have to change it. You have to add the words no, not, yani negatives, without changing the meaning. Akbar was a good king. Akbar was not a bad king. The idea is that now they mean the same, which they don't. I mean, fuzul baat hai. However, this is a table. This is not. This is not. Why Italia? This is not a table, and that's a lie. Okay, this is a table. That's the truth. बहुत खूब भाई. Good imagination, जना. It can be anyone. No, it is a table. This is a table. This is the sentence. Now, how are you changing that into a negative without changing the meaning? Now, if you say no, this is a table, so you are negating something else. Huh? There is no table. But that is not true. There is a table. This is not a metallic table. हमने तो कहा ही नहीं कि वो wooden table है metallic. जी. Yeah, go on. There is nothing on the table. Close. करीब है हालांकि वो बातें बोलो. आला ज़हरा के लिए ताले. You are going to say दोनों के लिए तालियां. आला. This is nothing but a table. ये देख. ये सही है. So no prizes for guessing who was the only one who got it in that class as well. All right. So हमारा break हुआ. आइए. Pause. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के चारों स्किल्स हमने हर बच्चे से, हर स्पीकर से, जितना भी कम गो हो, खामोश हो, साइलेंट हो, इंट्रोवर्ट हो, ही इज देयर, ही हैज टू डू दिस. एक लाइन, द टर्न्स आर इक्वल. अक्सर बच्चे जो क्लास में एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो टीचर का टाइम खा जाते हैं. अक्सर बच्चे हर चीज में ज्यादा जल्दी जवाब देके बट दैट इज नॉट द पॉइंट. इसके अंदर में आपने कुछ करना ही नहीं, हर एक ने करना है. अच्छा, जरा सा एक झलक इसकी तैयारी के लिए देख लें, देन वी ब्रेक फॉर टी. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, बस ये मैं आपको दे दूं. देखो भाई, ये अब हम बात कर रहे हैं तैयारी की. आप सबने कर लिया, फाइन, फबेहा, ओके, यू कैन कीप दिस पेपर. नाउ इसकी तैयारी में कुछ बातों का एहतियात, बिकॉज ऐसा लगता है आसानी तो आसान नहीं है. यू हैव टू प्रिपेयर दीज बिफोर. और इसके 2-3 पॉइंट्स. नंबर 1 आपने देखा ये तमाम हैंड राइटिंग में है. हेलो, बहुत जरूरी है हैंड राइटिंग. यू कांट टाइप दिस, यू कांट डू इट ऑन द कंप्यूटर, यू कांट. अपना राज हो रही है. हुसैना नहीं, ज़ाहरा इज अपसेट. सर मैं तो समझी खटाखट निकाल दूंगी ना, एक लाइन करने, एक कर्सर में. नो, बट इसका इलाज मैं दूंगा जिसमें आपकी बचत हो जाएगी और बच्चे मस्त हो जाए इन अ मोमेंट. देखें जी, म्यूचुअल डिक्टेशन में पहले तो आपने एक टेक्स्ट चूज करनी है. ऑब्वियसली दैट्स इजी. कोई एक टेक्स्ट चूज कर लें, फाइन, 15 लाइंस, थोड़ा हो, दमदार हो, छोटा में बात नहीं. फिर उसके बाद स्टेप 2, 2 कागज लें. ये देखिए, ये एक साथ हुए बगैर नहीं होगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस.
कि एक अदद यानी कि 2 अदद कागज लें, क्लिपबोर्ड पे लें, ए लिखें, बी लिखें और ये इस तरीके से ये टेक्स्ट आपने लिखनी. लेबल देम ए एंड बी. दिस इज मस्ट बी डन आजू बाजू में, राइट? नेक्स्ट, write the first line of the text on page 1 and when the line ends continue on page 2. देखिए, ये पहली लाइन पे लिखना शुरू किया और इधर से आगे लाइन छोड़ करके अगली बात लिखना शुरू. You see, please understand, don't say to someone जा दिख रहा, एक एक लाइन छोड़ी ने लखी ने ले आवी दे. That won't work. शुरू में आपको बच्चों को ये कराना होगा ताकि उनको जहन में, जिन्हें अपनी लैंग्वेज में कहते हैं शाकिलत, इनी शाकिलत इनी मिसल इना भेजा, मेरा मतलब है कि जहन में आवी जाए. देन इट विल वर्क. ठीक है जी, हेलो. आप भी जब करना शुरू करें, आई नो बहुत दफा हमारे कॉलीग्स हम लोग ने बनाया और वो लाइनों में गड़बड़ हो गई. वी हैव टू वेस्ट इट बिकॉज यू मस्ट लीव द स्पेस करेक्टली, राइट? ओके. देन व्हेन यू रीच द एंड ऑफ लाइन 2, हाँ, तो लाइन 2 की जब लास्ट आ जाए तो इधर के पेज के ऊपर जगह छोड़ करके अगली लाइन लिखनी है आपने. बात ये शाकिलत थी. राइट. You can see how an alternate line text is written out spread over 2 pages. तो इस तरीके से alternate lines 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4 ये यूं मरबूत तरतीब में आ रहे हैं. फॉलो नहीं? अब तो समझ आई ना, आप किया तो. हाँ, अब अगर हम वैसी हिदायत देते कहते हाँ कोक दिवसे करसू लाइक 230 मा मतलब. Now you know how it works. All right. Now the students are seated in pairs, A and B. Give page 1 to A and 2 to B. Ask them to dictate the lines of text to each other. And when they finish, let them correct each other. Hello? होगा कि नहीं होगा? Now, class 7. क्लास 7 के 2 ज़हीन बच्चों को पकड़ लें, सुने, उनसे लिखवाएं क्लास 4 के लिए. आला ज़ारा इज हैप्पी नाउ. मोइज, या यू आर ज़ारा मोइज, या भाई अगर वो मोइज हैं तो आप अजीज हैं. तो आला आला. ऑलराइट, फाइन. देखें जी, 2 क्लासेस ऊपर के बच्चों से छोटे बच्चों के लिए लिखवाने का हम एक तरीका बता दें कि क्लास 8 के बच्चों ने लिखना है क्लास 5 के लिए. और ये आपकी टेक्स्ट बुक से भी टेक्स्ट हो सकता है, इंग्लिश की हो, उर्दू की हो, इस्लामियात की हो, जिसमें भी, whatever it is. Now you have to decide and what do you think are the benefits. देखिए, क्लास 5 के बच्चों से 4 के लिए मत लिखवाएं. Don't do that. Why not? क्लास 5 में भी तो क्लास 4 से बड़े हैं. Why am I saying 2 साल का गैप होना जरूरी है? यानी ज्यादा भी, but 2. What do you think is the benefit of the, what is the logic behind this? They can understand. नहीं, वो तो उन्होंने तो, वो बच्चों ने ही करना है, छोटे बच्चों ने, बड़ों ने बनाना है. मैं बनाने वालों को 2 क्लास बड़ी कहने की जिद करता हूं. Why is that? No, किताब देख के करना है जी. उसका रिकॉर्ड छोड़ो यार, खुदा, एक तो एमी फजूल चीज. नहीं, एज गैप का क्या, चलो वो तो अभी तो मिस के लिए बना रहे हैं ना, उधर नहीं पता कि क्लास 5 के बच्चे कौन हैं और क्या हैं. नो, दैट डज इट मैटर. बट वो तो किताब छोटे बच्चों की तो होगी ना, बड़े बच्चों की किताब से थोड़ी लिख रहे हैं. नो. अरे भाई जी, क्वाइट ऑब्वियस. देखिए, आमीन. अरे एवरीवन शुड नो इट इज रिटन बाय. सुनाए, कमाल कर रही हैं आप. दाद का वक्त है. Of course they are senior. They are in class 7. They are senior, of course. ये बात भाई, तालियां. Exactly.
बड़े बच्चे क्लास 7 के बच्चे क्लास 4 की किताब को कॉपी करने में गलत नहीं करेंगे इल्ला कलीला all right, fine, we are done. Let's break for tea, take 20 minutes, come back. Thank you.
Janab. Assalamu alaikum. Right, we resume, and we will be doing more strategies, more activities. मैं जरा सा बस एक रिफ्लेक्शन ले करके हम आगे बढ़ते हैं. राइट. तो आपने देखा हमारी एग्जैक्ट मतलब या अभी और नहीं टी ब्रेक वो हो चुकी है. अच्छा, I'm now going to do a strategy called classroom whiteboard as thinking space. ठीक है जी. अब 3 pairs के लोग एक साथ बैठ जाएं. 6 people, 6 people थाल की तरह दायरे में बैठ जाएं. 6 लोग. हाँ देखो भाई, हाँ दैट्स गुड भाई. टोटल जनाना मर्दाना न करें, आराम से अपने ही लोग हैं साथ बैठे. ऑलराइट फाइन. नहीं हाँ जी भाई, जल्दी 1 मिनट. एज सून एज यू सेटल डाउन, एक आध ग्रुप में 5 हो जाए कोई वांधा नहीं. ठीक है, शाबाश. हाँ मेहर प्लीज भाई, आप हैंड आउट लो सगला. और एक राइटिंग का एक पेपर राइटिंग का एक अलग रखें, उसकी जरूरत पड़ेगी. एक पेपर, हाँ वो अलग एक पेपर रखें. राइट. या अभी वो बता देता हूं. दिस इज व्हाट एवरीवन हैज इट. इसको यस पढ़ना है. ओके, सब लोगों के पास, ग्रुप के पास पेपर्स आ गए. हमने वाफिर किए हुए हैं तो सबके पास आ गए. अच्छा जी, अब मैं बता दूं ग्रुप्स. अच्छा, हर ग्रुप अपना एक अच्छा सा नाम चुन लें. चूज अ नाइस नेम फॉर योरसेल्फ. Choose a name for yourself as a group. अकीक. वाह भाई, एक ग्रुप आ गया अकीक. वंडरफुल. लूलू मरजा आला. अच्छा डायमंड, चलो डायमंड. रूबी, सफायर, ओके. वर्ल्ड, पर्ल, दुर्र मखनून आला. और भाई लो ठीक है. that also means pearl, but the English pearl, yeah. Right, okay. मरजान हो गया. रूबी, या रूबी, सफायर, यकीक. वंडरफुल. डायमंड. ठीक है. हाँ भाई, ऑलराइट. क्विकली मैं हिदायत दे दूं. यस, वी नीड टू मूव ऑन. अच्छा जी, अब अगली 9 मिनट्स में देखिए जी, अब अगली 9 मिनट्स में एक अदद पेपर, एक शीट ऑफ पेपर अपने लिए राइटिंग के लिए अलग रखेगा. उसका एक पेपर, आई वोंट टेक इट, बट उसकी जरूरत पड़ेगी अगले स्टेप के लिए. मैं स्टेप बता दूं और उसको रेडी रखें. एक पेपर रेडी रखे, फाड़ दीजिए और रेडी रखिए. उसके ऊपर सब लोग मिल करके लिखेंगे. ठीक है जी. अच्छा, आप हाँ जी, सबर. हाँ राइट. आपने इस टेक्स्ट के ऊपर सवालात बनाने हैं जिसका के जवाब इसी टेक्स्ट में हो. राइट. पढ़िए और सवालात बनाइए जो के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है ना. 10 actually, so fast, quick. आपने बोला आप बच्चों ने सवाल भी ऐसे ही बनाए होंगे. आपसे सर आपने हमें टीच किया था.
सेकंड वन जो था ना, आई थिंक मुश्किल में जो हुआ था इन पर्सन में, इन पर्सन तो गाँव दादा ये ये इस वक्त मुझे ये लेक्चर देना जरूरी है ताकि मैडम यकीन नहीं करा मेजोरिटी ग्रुप एक्टिविटीज में ज़्यादा आपका ज़्यादा फोकस ग्रुप एक्टिविटी है। एक मैंने और आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं देना, अगर आइए हमारे यहाँ बहुत होशियार है तो वो सपोर्ट है।
questions? થઈ ગયા? અરે વાહ, ऐसा ना माशाल्लाह. Katla questions? Pearl group? Quick, jaldi. Are wah, 8, 6. That's the Ruby group. Hello. 5, Sapphire. You are the Sapphire group. 5. Mashallah, jaldi se ek aur kar dalein. Right. Lulu group. Hello. How many? Lulu group. Hello. Jaldi. Make 6. All right. Pearl group I have asked. Yes. Gentlemen. Allah, bus 6. Kar lo. All right. All right. Done. All right. अच्छा जी आइए भाई, we need to move a little fast. अगर 6 सवाल हो जाएं stop. ठीक है जी, thank you, very good. All right, we begin with ठीक है, it's okay. We begin with the work. अब जरा watch कीजिएगा. All right, we will diamond group will go first. Listen. Hello. Diamond group के बाद अकीक ग्रुप. तरतीब याद रखिएगा. डायमंड ग्रुप के बाद अकीक ग्रुप के बाद पर्ल ग्रुप के बाद सफायर ग्रुप या के बाद रूबी ग्रुप के बाद लुलू ग्रुप. राइट? सर ने याद છે હા. सॉरी, वो रजल हाँ, वो एक्टिविटी हमारे लिए बहुत आसान होगी. राइट, ओके, थैंक यू. आइए भाई, डायमंड ग्रुप प्लीज कम एंड राइट अ क्वेश्चन हियर प्लीज. कम वन पर्सन आ जाओ. ऑल राइट, अकीक ग्रुप तैयार हो जाए, भी आपको बुलाया जाएगा. सवाल लिखिए. राइट जी, अकीक ग्रुप आइए जी, सवाल लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इनके बाद. थैंक यू. Very nice. माशाल्लाह, very nice. था, शाबाश. हाँ भाई, आइए अकी ग्रुप, अगला सवाल लिखिएगा प्लीज. यूज अनदर कलर. थैंक यू. Right. Now Pearl group, आ जाओ. Pearl group will also write a question. हाँ जी, ठीक है, गुड. शाबाश. Yes. Yes. Use black. Here you go. हाँ, ये ब्लू वाला मुझे दे. Thank you. अच्छा जी. Now, in the real world, जी, in the real, जी, let her finish. In the real world, the board will be visible by all the children in the class. You have to do this in the classroom on your board.
So we are talking about the classroom whiteboard as thinking space, right? Right, wonderful. Thank you, Ji. Okay, now let me just pause here and give you the instructions. Or ab agla group, ek minute, this is your Sapphire group, right? So, yeah, Sapphire group, I know the huruf are very small of the first question, right? अच्छा now अब आप गौर से देख ले, can you read? आप आराम से पढ़ सकती हैं, करीब आगे पढ़ना चाहती हैं, whatever, it's okay. In the class of course they will be visible, but here the board is a bit far. ऐसा करें ना, जरा सा करीब ही कर लें, बोर्ड को हम थोड़ा सा करीब भी कर सकते हैं, हमें क्या जरूरत है वहां करने की. आ जाए, जरा सा हाथ दें. Thank you. Bring it closer so that we are all. हाँ, हाथ दीजिएगा, शाबाश. Right, excellent. भाई यू एंगल कर लो तो सुनो कैमरा में भी आ जाएगा ना, सुनो. हाँ, चेंज द एंगल स्लाइटली, शाबाश. दैट्स ग्रेट. आला, हाँ, बस ठीक है. Is that slightly better? All of you try and read the questions because now I'm going to change. Listen. Okay. Sapphire group will write the answer to question number 1. And the Ruby group will prepare the next question. All right. Ruby group से सवाल है, लेकिन Sapphire group से जवाब है. Watch this. लीजिएगा भाई, देख लो अच्छी तरह से, तैयारी करके आओ, सोच लो. वो मनासिक में एक आध रकात चुक गई. अच्छा, इस तरह. Okay, I'll find out later what क्या variation किया आपने. Variations are okay, बस हमारा मकसद तो learning है. But this is the step. Oh भाई, hello, Zahra and yes, Arwa is also there. Yeah, आ जाओ. One of you please come write the answer. इधर लिखना है, उधर नहीं लिखना. Hello. इधर बोर्ड पे लिखना है. And make it brief because the point here is to demonstrate the idea. Black में लिखा हुआ ना, black में लिखा. ठीक है. Right. Only one. Listen. ये पूरा मजमून न भी लिखें. How can we buy करके शुरू करें and just write an answer. It must be the answer must be in the opening paragraph. And write a generalized answer. They made a question from the end of the page. Allah. एक से एक ज़हीन लोग. Allah. कोई बात नहीं, हमारा मकसद तो स्ट्रैटेजी पढ़ाना है, सबक थोड़ी पढ़ाना है. नहीं कोई नहीं. And power of power stations. ठीक, बस ठीक. Fine, thank you. All right, जी. Ruby group, next question please. And Lulu group, answer to question number 2. आपके लिए वो है, लीजिएगा. नहीं, ये वाला है. ये ब्लू का ब्लू. You have to write the, no, not yet, I didn't write the 4th question.
One more question. I told you there are so many questions. So write one more question. Either questions. देखो ये heading questions. आला. हाँ जी. So लुलु ग्रुप से दरखास्त है कि वो जवाब जल्दी से तैयार कर लें, छोटा सा निक्का सा बुलेट पॉइंट सा. It's okay. बहुत खूब. वाह, ठीक है. Thank you. Like. हाँ जी. Lulu group, answer to question number 2, please. आ जाएं, quick. Black. This one. Oh, अच्छा. Then. ठीक. इसको. Thank you, Yakuta. All right, fine. Okay, we will pause here. We need to do other strategies. So now, let us quickly do a recap of this. Right. भाई थोड़ा सा पंखा खोल दिया जाए वहां का. What do you think? हाँ? ये वाला, आपके ऊपर वाला. ठीक है. All right. Take a look. Here. देखें जी. आपने सबक पढ़ा दिया. अल्फाज और उनके मुश्किल मानी बता दिए. जो मुश्किल अल्फाज और उनके माने. अल्फाज और उनके मुश्किल माने. है ना. बच्चों को कभी कभी हम मीनिंग बताते वो उस लफ्ज से ज्यादा मुश्किल होते हैं. एनीवे, जब आप एक सबक पढ़ा चुके हैं उसके बाद आपने तमाम क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, वर्ड्स मीनिंग्स भी कर लिए, तमाम कर लिया. इट्स ऑल डन. A week later, आप कोई और सबक पढ़ा रहे हैं. A week later, you do this activity on this lesson. ठीक. तो सब बच्चों के पास टेक्स्ट बुक होगी और इसके लिए ये लाजमी है बच्चों को ग्रुप में बैठा का. अब इस सबक में तुम लोगों ने 10 सवाल बनाने हैं और I assure you the children will make questions far sharper than those made by the textbook writer. But that's another story. वो ठीक है. देखें जी, आपने ये करना है. Here are the steps. देखें जी. Divide the whiteboard in half with a line going through, which is what I did. I drew a line, read, divided the half. ठीक है. All right. Write questions. I did. I wrote questions and then answers in the other one. I did. Okay. I also did. हर चीज तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं लेकिन मैं अमलन कर सकता हूँ. आपने देखा कि हमने यहाँ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 लिख रखा है पहले से और यहाँ पर भी 1 2 3 4. ये लिखने का क्या फायदा हुआ? एक सेकेंडली करेक्ट. एक आपको पता चला 1 का जवाब यहाँ है. बट पहले से 1 2 3 मैंने क्यों लिखा? आपसे क्या था 1 का लिखो बेटू, अगला सवाल लिखो. सॉरी, इतना ही करना है. ओके. नहीं, इतने में ही करना है. तीसरी जगह. यस, आई होप इट इज. आमीन. आमीन. देखिए जी, when the teacher fixes the space on the board, it becomes unconsciously for the children to a signal that you have to finish your writing there. Now, some people will have vada vada font. Some people will have nika nika font. I understand. I understand. All that is fine. All that is okay. But this is how you manipulate it because har cheez nahi ho sakti. So that's fine, but you do it subtly. Acha. Now,
देखिएगा, सी दीज आर द स्टेप्स ऑफ दिस, और आप लोगों को इसका हैंडआउट भी मिल जाएगा जिसमें ही तमाम हैंडआउट स्ट्रेटजी लिखी हुई है। आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक 10, अब जाहिर है आप लोगों के पास और कोई काम तो है नहीं लेकिन एक्चुअल क्लास में आई वुड मेक 10 क्वेश्चन, ठीक है जी। The question must be written on a sheet of paper. I told you, take out a sheet of paper, write it, and suppose the class has 5 groups, right? And it so happens we have 6 groups. That's okay. Now, ask student from group 1 to come up to the board and write a question, and which is what I did. I called one person and said, write a question. Then I called another group person to write another question. Listen carefully. And write another question. Then ask another group from student 3 to write a question. So I had 3 questions. Now, in the class, the children are listening to, are watching 3 questions. And they know that the word answers is here. Get this. What are they doing? What is the name of this strategy? No, classroom, whiteboard, as thinking. You see, they are now thinking about what you want them to think about. Please understand, जो लोग बातें करते हैं thinking की, you don't just think, you think about something. ये इतने से जुमले में there's a whole philosophy class right there. कि यूनान के सबसे अजीम फिलोसोफर्स का इतना बड़ा ट्रेडिशन खत्म क्यों हो गया? जो कल्चर सुकरात, अफलातून, अरस्तु दे सकता था, वो बाद की सदियों में इतने बड़े नाम क्यों नहीं आए, बल्कि खत्म ही हो गए? तो इसका जवाब एक और जीनियस ने दिया, रॉबर्ट पर्सिग, in his book, never mind, Abbas, cut down. He says, because they ran out of things to think about. They ran out of things to think about. उनके मौजूआत खत्म हो गए कि किस चीज के बारे में सोचेंगे आप? तो जिस पर सोचना था उतना हो गया, उसके बाद खत्म. और इस पर खिराज जेकब ब्रोनोस्की ने एसेंट ऑफ मैन में लिखा हुआ है, it was only the Islamic civilization with a new impulse with the Quran that gave mankind new things to think about. Wallah, ये मतलब ये अंदाज जो है स्टोरीज का, we have no way. We are involved in the book, but those who are not are able to tell us great things about the book. बात पहुंची आप तक? You're lost. All right, my digressions are more interesting than my lecture, so I better turn to. So they are thinking about this. They know. Now from group 4, which is what I did, now you have 3 questions on the whiteboard and available for the class to see and think about. Now, अब देखिए यहाँ पर तो हमने choice वॉइस नहीं दिया because के no. I need to do another style. Now offer a choice. अब सुनिए, choice में और complicated. Either write an answer on the board to question 1 or write question 4. हमने by the way तजुर्बे में देखा है कि लोग ये और वॉर के चक्कर में नहीं पड़ते, हम कहते सर बता दे क्या करना है, तो हमने स्ट्रेट बता दिया, आपने जवाब देना, that's it. But please listen from this point onwards. Now it can get very clever because the children have done the lesson, they know it well. अभी अचंभे की बात ना हो, पहली बार ये ना हो, ये सबक जिंदगी में पहली बार नहीं पढ़ना चाहिए. यहाँ आप लोगों को हमने ये ऑक्सफोर्ड की मेहर, हेलो, ये ऑक्सफोर्ड की कौन सी किताब से लिया गया है? ग्रेड 5. देखिए, गॉट इट. ये ग्रेड 5 की इंग्लिश किताब में से लिया गया है और आप सब टीचर्स हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि इल्ला कलीलन कि आप लोग 5वीं जमात की किताब की प्रोसेसिंग तेजी से करेंगे 5वीं के बच्चों से. Therefore we gave you this so that everyone would have the same lesson to, it cannot be done otherwise. All of the questions are about the same lesson and the same text. ठीक है? Now from this point onwards, any student may come forward to either write a question or an answer, but make sure that there are at least 3 questions more than the answers at any point. ये उसूली बात है. सवालात हमेशा ज्यादा हों और जवाबात पीछे से आए, यानी सवाल 5 लगे हुए हों बोर्ड पे
और सवाल नंबर फिर उसका जवाब 3 आए, फिर उधर 6, 7, 8, 9 आगे आते जाए, फिर यहाँ अगला अगला अगला। जाहिर है जब 10 सवाल पूरे हो जाएं और उसके बाद मजीद सवाल हो तो फिर जाहिर है आप जल्दी से जवाब पूरे लिखवा लें। द पॉइंट इज, फिर आप बच्चों से कहा इसे अपनी कॉपी में चेक कॉपी कर लो, क्या फायदा हो? हेलो, क्या फायदा हो? बिल्कुल। और माँ बाप को जिनको मुसीबत पड़ी, हाय मेरा निक्का जाता ना स्कूल तो उसकी कॉपी खाली की खाली, अब कहेंगे लो हमने फिर। हेलो, समझ आई? Please do it like this. If you do it in any other way, the learning will be a bit less. This makes sure it is maximum learning and maximum thinking. ठीक है जी? Hello. अब एक फिर और. Suppose 10 questions on the board, the teacher may have. Now, some of the children's writing may have errors. हाँ, अब suppose ये सुनिए गौर से, कोई सवाल में या उसमें या कहीं पर वर्ड में या स्पेलिंग में, यहाँ तो माशाल्लाह यू आर ऑल ओके, बट बच्चों ने जब लिखेंगे तो इट इज पॉसिबल, आपने जो लोगों की प्रैक्टिस है बोर्ड पे लिखने की उनको पता है, लेकिन जिनके नहीं है, पहली बार जब बच्चे महाका से लिखते हैं उनको अजीब हाल होता है, दे हैव नेवर डन दिस, सो इट इज हार्ड एंड एवरीवन हैज. सपोज देयर इज अ ग्रामेटिकल एरर ऑन द बोर्ड. लिसन, डू नॉट से एनीथिंग फर्स्ट, डू नॉट hold it, zip, wait for a child to notice it. तो क्लास के अंदर में एक अदद बच्चा होगा कामरान, तो कामरान क्योंकि उसको हमेशा अंग्रेजी की मुसीबत पड़ी और हर एपोस्ट्रोफी एस और एस की गलतियों को नोट करता है, तो वो कहेगा मिस क्वेश्चन, तो फिर आप ये कहें श्योर इनफ व्हेन समवन डज गिव देम अ टर्न एट करेक्टिंग इट. कामरान से कहो इधर आओ इसको ठीक करो. You see, आप ना करें. Engaging teachers, engaging students. Hello, are you lost? Are you engaged? Yes, yes. ठीक है जी. As you can see, this is a whole class activity and allows the students of all level to perform. अब यहाँ पर हमने आपसे कहा सफायर ग्रुप, लुलू ग्रुप, पर्ल ग्रुप वगैरह वगैरह. नाउ इन द रियल वर्ल्ड अगर मुझे रैंडम कॉल्स करने हैं तो एक स्ट्रेटजी है जिसको कहते हैं नंबर ऑफ. तो अब क्या होगा, आपने अपने आप को नंबर्स दे दिए 1 2 3 4 5. अब मैं पुकारूंगा तो कहूंगा अकी ग्रुप नंबर 4. मुझे नहीं पता 4 कौन है, लेकिन जब क्लास को यह पता होगा कि सर अचानक जिसका भी लेंगे उसको वो कागज उठ करके आन करके यहां सवाल लिखना है, तो फिर वो ये नहीं कहेगा हाँ सर ये मुझे नहीं पता ये किसने लिखा है, ये हैंडराइटिंग ये उसी को बुलाया. तो दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेटजी कि बच्चों को पता होना चाहिए कि जिस कागज पे लिख रहे वो सबको पढ़ने के लायक हो. So all of these over time children will learn how to do these kinds of things, small things but they are big things. So then you say all right, Ruby group person 4, person 1, you do numbering off by the group and then call a number random every time. So किसी को भी नहीं पता किसको बुलाया जाएगा, लेकिन हर एक को पता है कि उन्हें या तो सवाल लिखना है जवाब लिखना है. By God, they are ready, they are on their toes. Hello, होगा कि नहीं होगा? ठीक है जी. So now, did you read? Did you write? Did you listen? Did you speak? 4 काम करने को थे, चारों काम करा. हेलो सकीना जी, नहीं क्या आपने कहा 4 काम, क्या? You made a comment on that. What was that? I heard you. बताओ. आला, ये भी होता है. ये भी होता है. ठीक है. We now do one more. जितना के टाइम है हम एक करेंगे, बकाया के आपको लिस्ट दे देंगे, वेबसाइट दे देंगे, जाओ खुद ही पढ़ लो खुद. All right.
we now do this. Here's the answer. Where's the question? Here's the answer. Where's the question? लो भाई जल्दी से एक एक पास आउट करो चलो. Quick. अब इस दफा जल्दी से we will give 2 sheets. Are we giving 2 sheets per group? Shabash. Good. ले लो भाई जल्दी quick. दो पेपर ले लो बस शेयर. ये लो. Write the answer in the same color. Don't use red. Blue या black. ली जनाब चलें ठीक है. अभी ने एक नजर बस पढ़ लीजिए. आपने लिखन पढ़त नहीं करनी. अब आपने यहाँ गुफ्त ये ओरल ये स्पीकिंग रीडिंग स्पीकिंग इंटरफेस है. बस एक नजर सबक पढ़ लीजिए फिर मिलता जाएगा वक्त मिलेगा. ऑलराइट शाबाश. हाँ अभी राइट. अच्छा जी. यस बट 6 भी लिख दें. ऑलराइट. हाँ जी एक नजर जरा सा बोर्ड को देखेगा. Here's the answer. Where's the question? ठीक है जी. Alright. हमने आज जॉन हैटी को सुना कि टीचर्स एक स्कूल के दिन में कितने सवाल पूछ लेती हैं. एक नंबर गुजरा 250 150 to 150 to 250 questions in a day. और बहुत सारे इन सवालात का जवाब 2 लफ्ज या 3 लफ्ज से ज्यादा नहीं. जी हाँ जी. यस सर. यस मिस. यानी इट्स अमेजिंग. सो नाउ ये जवाब हैं. लिसन केयरफुली. हमने जब कभी भी एक्टिविटी में लोगों से कहा जवाबात लिखें तो उन सिवाय सवाल लिखने का कुछ सूझा ही नहीं. ये भी एक ऑक्यूपेशनल ओके. नाउ आपके सामने वो सबक है वो वहां सामने मौजूद है. बताएं जी सवाल ये है जवाब कहाँ है. दैट्स द सेम स्ट्रेटजी. हियर इज द आंसर. वेयर इज द क्वेश्चन. अबू रेहान अल बैरूनी वो सवाल दें जिसका कि ये जवाब है. बताइए. मुसलमानों के आलिम कौन. ओके वाह. मुसलमान आलिमों में किसको इम्तियाजी हैसियत हासिल थी. अबू रेहान अल बैरूनी. See, there are many variations, many possibilities. यही तो point.
हाँ, अल बैरूनी, अगला, वी आर डूइंग द नेक्स्ट। अबू रेहान अल बैरूनी ख्वारिज़्म क्यों गए थे? क्योंकि ख्वारिज़्म उलूम व फ़नून का मरकज था। ओके, यस प्लीज। अच्छा, अभी दूसरा, आई गॉट इट, आई गॉट इट, यस प्लीज। नहीं, दूसरा का मुझे कोई और सवाल बना के दे जिसका के जवाब ही हो। गो ऑन, गो ऑन। अल बैरूनी की राय में के दौर में उलूम व फ़नून का कौन सा शहर था? उलूम व फ़नून का शहर ख्वारिज़्म। गुड, हाँ बिल्कुल हो सकता। ये भी हम आगे चले गए, अभी दो पर आराम से आसपा। इनो देखिए देखिए, बच्चों को हम लोग बच्चों को जितना लिमिट और नैरो बैंडविड्थ पे बजित रखते हैं, उसके बजाय ये वाला बैंडविड्थ को बड़ा करता है। इट इज अ ब्रॉड बैंड। इट्स ट्रूली इंटरेस्टिंग। द थिंग चेंजेस एज वी शैल सी। बहुत खूब। आइए अस्मा जैन हमें अगले का जवाब दे। किस किताब में किया आसार बाकिया? फाइन, ये तो आपने बिल्कुल। कैन यू मेक अनदर क्वेश्चन जिसका जवाब अल बाकिया हो? आसार अल बाकिया जी। नहीं, अगर ये लिखेंगे तो जवाब ये नहीं आएगा ना। सी, ऐसा सवाल। अल बैरून ने कौन सी किताब लिखी? आसार बाकिया। अल बैरूनी की एक किताब जो मंसूर के नाम हो, आसार बाकिया। क्या अल बैरूनी ने मंसूर के लिए कोई किताब लिखी? जी हाँ, आसार बाकिया। सो यू कैन, देखिए आप लोग सब एकदम परेशान हैं कि पता नहीं क्या, but that is the whole point. It can be very funny and enjoyable as well, and that's the point. हाँ भाई, आगे सुल्तान महमूद गजनवी सवाल अरबा। अल बैरून का इम्तिहान कौन से बादशाह ने लिया? महमूद गजनवी। ख्वारिज़्म को किसने फतेह किया? सुल्तान महमूद गजनवी। अल बैरूनी किसके साथ गजनी गए? महमूद हुसैन गजनी के साथ। ओके। गजनी जी, एक मिनट। हिंदुस्तान पर तौहीद का परचम? अच्छा, मैं समझा कोई और परचम। अच्छा, हाँ जी। किस सुल्तान ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए? सुल्तान महमूद। You see many possibilities. Yes, Sakina. जी, go on. हाँ, अल बैरूनी के इल्म की कौन से बादशाह या सुल्तान ने कदर की? सुल्तान महमूद गजनवी। एक्सलेंट, एक्सलेंट, ठीक है। अब आइए देखिए ना, इधर तक तो आप टेक्स्ट बुक के अंदर में रसिया हैं और आप इसी तरह की चीजें बहुत करते हैं। अब मैं एक ऐसा स्पिन दूंगा जिसमें क्लास के ऑलमोस्ट एवरी चाइल्ड, अगर मैंने 40 बच्चे बैठे हुए हैं, 40 बच्चे, हर एक ऐसा सवाल दे सकता है जिसका कि ये जवाब है। वॉच दिस। अब एक जवाब लिखता हूं। इट कैन बी क्वाइट डिलिशियस एंड डिलाइटफुल। हियर इट इज। बस सुनिए, सवाल बताइए जी। हेलो, यस, जी जी। जी हाँ, क्या इस्लाम में? जी हाँ। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी पास ऑन करो ताकि आवाज आए। हाँ भाई, जहरा, मोइज, बोलो कोई एक सवाल जिसका जवाब जी हाँ हो। बैरूनी ने आसार बाकिया लिखी है या? क्या आसार बाकिया अल बैरूनी लिखी है? जी हाँ। क्या अल बैरूनी मुसलमान था? जी हाँ। ओके। जल्दी भाई। हाँ, अस्मा जैन,
अबू रेहान के वालिदैन अमीर थे? अभी क्या अबू रेहान के वालिदैन अमीर थे? जी हाँ। जी नहीं। जी नहीं, अच्छा अच्छा, अमीर I don't know, I was just checking. You have gone to the next one. अभी जी हाँ के बारे में पॉसिबिलिटीज पर बात कर। आसार वाक़िया कोई किताब का नाम है? आसार वाक़िया किसी किताब का नाम है? जी हाँ। तुमने पढ़ लिया है? आला। हाँ जी। अल बैरूनी ने तकरीबन 1000 साल पहले ये किताब लिखी है। हाँ, अल बैरूनी ने ये तकरीबन 1000 साल पहले किताबें लिखी हैं। क्या क्या अल बैरूनी के 7 साल पहले किताबें? जी हाँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इसका जवाब मुझे ऐसा सवाल बनाओ जो ये या फिर इस पर जाए। क्या बोलो भाई। क्या हाँ ओके, क्या अल बैरूनी को इल्म नजूम में महारत हासिल थी? क्या महमूद गजनवी? जवाब क्या है? जी हाँ बिल्कुल थी। जनाब क्या महमूद गजनवी ने सोचा क्यों ना अल बैरूनी का इम्तिहान लिया जाए? जी हाँ। क्यों ना लिया, ये सवाल जरा ट्रिकी है। हाँ जी, कोई और? एंड यू कैन मेक वेरी फनी वंस आल्सो। किए थे? अच्छा। जी हाँ। इस पर एक जोक ने मुझे बहुत मुश्किल में डाला, वो रियल स्टोरी। हायर एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में हम एक वर्कशॉप करा रहे थे, 30 लोग बैठे हुए थे। कहीं मजाक में हमने कह दिया, और हमारा तल्ख रहता है जरा। मैंने कहा पता है महमूद गजनवी बहुत बहुत जबरदस्त थे। वो सोमनाथ के मंदिर में उसको ढस करने आए थे, लेकिन वो 17वां हमला था। ओके, बताओ वो पहले 16 क्यों आए थे? 17वें हमले में तो हमें पता है कि उन्होंने सोमनाथ को ढस किया, फाइन, बड़ा कमाल किया, लेकिन चलो फाइन। वो 1 to 16 वाली ट्रिप में क्यों आए थे? तो हिस्टोरिकली nobody knows actually. Here is the answer. I know, I read. He came to kill the wrong kind of Muslims. महमूद गजनवी को मुसीबत पड़ी हुई थी कि ये शिया, ये रावजी, ये सारे दूसरे गलत किस्म के लोग हैं दुनिया में बसे हुए। तो पहले 16 हमले हैं ना, गलत किस्म के मुसलमानों को मारने आते थे। 17वें में हिंदू के अंदर में सोमनाथ के लिए आया। कमाल, ये याद रखेगा। हमने जब ये तंज वाला, जो कि तारीखी तौर पर सच है, जुमला कह दिया, बाय गॉड। एक साहब बैठे हुए थे जो कहते थे मैं उसके खानदान से हूँ, मैं महमूद गजनवी के शजरे में उसकी लाइक पर पोता होता हूँ। और आपने ये क्या खबर जबरदस्त बात कर दी आप, मतलब वो तो यूं थे, वो तो यूं थे। जो the way we glorify the rascals in our history, I mean, hello, I don't need to go more, but actually वो Mahmud Ghaznavi came against where today we have Sevan Sharif, and it was a very great Shia markaz of knowledge, and Mahmud Ghaznavi came and saf corroded, and he was doing a khidmat to Islam because he was killing the wrong kind of Muslims, the moron. So the problem is, because we don't know our history and we glorify every ruler because we are stupid, we study the whitewash history. When you remove the whitewash and you come up with the facts, the people get even more worried. And so वो साहब भाई वो गजनवी के औलाद थे, वो खासे नाराज हो गए मुझसे, तो बड़ी माफी लगनी पड़ गई HEC के डायरेक्टर से और उससे। क्या अल बैरूनी कराची आए थे? जी जी नहीं। क्या अल बैरूनी 110 साल की उम्र जिए थे? जी नहीं। You see? आला क्या 2000 बनाया था? नहीं, देखो मिस कर गए। उन्होंने वो मिस कर ना। That's a good one. जी नहीं, sorry, I missed that. है ना, फिर मामा नहीं। ठीक है ना, do you get the idea? Now the children will start laugh. It is amazing how many silly questions can be made, but they are all interested in the lesson. You see, जब हम सवाल पूछते तो हम बच्चों को आमिल, मामूल, हाकिम, महकूम, गालिब, मगलूब के चक्कर में डाल देते। जब वो सवाल पूछते
जो सोच चलती, जो सबक पढ़ पढ़ के बातें करते हैं, जो चीजें चलती हैं सबक, बस हियर इज द आंसर। जी आप कुछ गालिब के बारे में सोच में लग गए। Yeah, all right. Here is the answer. Where's the question? Enjoyed it? मजा आया? Now you see what engagement is. Engaging teachers, engaging students. और इसका सबसे बड़ा कमाल है कि ऑलमोस्ट तैयारी में कोई काम नहीं करना सिवाय ये कि रात पहले खुद सबक पढ़ लेना टीचर को, और चंद फिक्रे चिट ऑफ पेपर पे लिख के लाने, ऑन करके बोर्ड पे लिखना है, और आराम से 20 मिनट बच्चों को ऐसा सबक याद हो जाएगा। They will study everything. Hello. Yeah, okay. Yeah. Yeah. Abu Rehan al-Biruni याद। So the typical job of teachers जो हैं सवालात का बनाना, हम उसके इतने रसिया हैं कि हमने ये काम उल्टा कर दिया, हमने बच्चों को दे दिया सवाल। ठीक है जी, which is a mark of all good readers. So here are the steps to follow, select a text वगैरह तमाम हिदायत हैं। हाँ जी, मैं closing, I just have all right, we are a little off, बस ठीक है। Google Maps, भाई ये बड़ा सिंपल साहब, आजकल तो Google Maps आ गए हैं, बहुत सी पॉसिबिलिटीज। बच्चों से कहें कि स्कूल तक का अपने घर के इलाके का जो मैप बनता है कितने किलोमीटर्स का, वो बनाओ और नोट करो। So much can be done. मैथमेटिक्स करना है, आप ये बताओ कि हमने एक स्कूल ने एक वैन ली है जो 4 बच्चों को घर पे छोड़ के आएगी, बताओ कितने किलोमीटर चले। वाह, आजकल तो ये सब इज इजी लाइक एनीथिंग। हमने तो ये एक्टिविटी उस वक्त बताई जब कराची शहर का नक्शा पीटीडीसी के रेस्ट हाउस में मिलता था, तो वहां से जाकर के फ्लायर लेकर आते थे, वहां कराची का मैप होता था जिसको हम इलाज कराते थे और स्कूल पे लगवाते थे। आज द वर्ल्ड हैज चेंज, सो गूगल मैप्स में बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। सोशल स्टडीज पढ़ानी है आपने, एक सिंगापुर की किताब में हमने एक एक्टिविटी देखी, बहुत मजा आया। सिंगापुर की किताब में लिखा हुआ है कि बेटा नीचे जाओ घर में और देखो सब्जी वाला का जो ठेला लगा हुआ है वो कहाँ है, तो सब्जी वाले का ठेला होता है थोड़ी सी, फिर गौर करो, थोड़ी देर खड़े रहो, देखो कस्टमर्स कहाँ कहाँ के हैं, और बड़े अदब से पूछो कि आप देखिएगा कि सब्जी वाले के कस्टमर्स एक रेडियस से ज्यादा दूर नहीं होते, एक जरा सा रेडियस और करो तो दूसरा सब्जी वाला हो, एक उसके कस्टमर्स एक रेडियस ही में रहते। तो बच्चे का काम है डॉट्स लगाना कि किन किन फ्लैटों से और उससे लोग इस सब्जी वाले से लेते हैं। फाइन, फिर कहा जरा ये किराना स्टोर है, इसके कस्टमर्स किस फासले से आते हैं। नाउ यू नो सब्जी इज पेरिशेबल, तो उधर के तो लोग वॉकिंग डिस्टेंस ही पे आएंगे, लेकिन जो किराना स्टोर है उसके सरकमफ्रेंस थोड़ा सा और बड़ा होगा। This is how you teach children civic sense. This is how you teach children the civilization of a city. So much can be done with the maps. फिर आप प्लस माइनस सिखाना चाहते हैं तो बस का रूट वर्कआउट करें, इकोनॉमिक्स सिखाना चाहते हैं तो पेट्रोल की कीमत वर्कआउट करने को कहें कि अगर गाड़ी पर किलोमीटर उसका रेट ये है, तो बताओ चीपेस्ट तरीका क्या होगा इन 4 बच्चों को घर पे ड्रॉप करने का पिकनिक के बाद। वाओ, now they have to map the shortest route. They will love it. समझ आ रही? खैर बच्चों से पहले ना 4 टीचर ये हरकत कर लेना स्टाफ रूम में they will learn something. अच्छा जी, ग्राफ एक्टिविटी, ये I wanted to do it. देखिए अगर क्या हम इसको नेक्स्ट पे ले जाएं, एक हमारा इन पर्सन सेशन है लास्ट जो बाकी है, कैन वी डू इट देन? ऐसा कर, ये स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट, अच्छा मैं आगे बढ़, ये भी स्ट्रैटेजी वी विल डू द नेक्स्ट टाइम, अदर स्ट्रैटेजीज वी हैव अ लॉट, यू नो वी आर मतलब फारिग पीपल, तो यूजिंग गूगल मैप्स, यूजिंग फूड टू टीच एंगेजिंग लेसन, ये तमाम स्ट्रैटेजीज पर वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइम एंड वी विल डू दैट। आइए जी, हाँ इसके बारे में भी मुझे जरा सा दिल पे हाथ रख के बता दें, सच चलें उठा के भी बता दें। हैव यू गॉट अ चांस टू रीड दिस? ओके,
और इसको भी हम मौखर कर दें कि मजीद चांस मिल जाए पढ़ने का और सोचें। इतना हम बता दूं, बाय द वे आई हैव रिसीव्ड सम इंटरप्रिटेशंस एंड दे हैव मिस्ड द पॉइंट। तो जरा बता दूं मैं कि ये ऑब्वियस नहीं है, ये ऑब्वियस नहीं, you'll have to read it carefully. The monostomachics and the bistomachics began to die out, and only the tristomachics, the three पेट वाला, survived. Is that a good thing or not a good thing? ये वर्कआउट करना है. This you have to decide. अगर आपने सोचा survival of the fittest, is it really the fittest? No. बस ये एक क्लिक है इसमें, जरा सा गौर कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर कुछ चाबी लगाएंगे, ठीक है जी? ऑलराइट, तो बस जी हमारी क्लास खत्म हुई। हमारे आज की टास्क जरा लिस्ट सुन लीजिए। आज की क्लास के बारे में आपने रिफ्लेक्शन देना है। यू नो आई एम वेटिंग, बाय द वे पिछली क्लास का मैं इंतजार कर रहा हूँ। ऑलराइट, क्लासरूम प्रैक्टिस एपिसोड्स। आज हमने चंद स्ट्रेटजीज बताई, दीगर बातें भी आपको पता है। अब आपके पास 14 डेज हैं फ्रॉम टुडे अंटिल 5th of March। अब वी आर डन नाउ। एक ऑनलाइन क्लास होगी मंगल, जुमेरात, एक जुमेरात के दिन प्रोफेशनल कैपिटल पर क्लास होगी जी, एग्जैक्टली वही। अच्छा चलो, सो वी विल डू दैट। उस वक्त तक मैं आपके पास क्लासरूम प्रैक्टिस एपिसोड्स के लिखने का वक्त है कि जो स्ट्रेटजी आप क्लास में अप्लाई करें उसके बारे में चंद पैराग्राफ में बता दें, हमने ये किया और उसका ये नतीजा हुआ, बच्चे एक्साइटेड हुए, खुश हुए, नहीं खुश हुए, परेशान हुए, अच्छा वो हुए ना आप परेशान हुए व्हाटएवर। और बाबा थोड़ी टेड टॉक सुन लो, तालीम पाओ, और याद है रोज रोज एक, चलो रोज ना सही इफ यू वर टू डू, जितने आप करेंगे, जितना आप करेंगे आपका इसका फायदा है। एंड लास्टली इंटरप्रिटेशन, तो उस पर ये हैं जनाब टास्क्स का लिस्ट, एंड दैट कंक्लूड्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। एंड अभी भी इंटरनेट पर, ऑनलाइन पर हम जवाब देने के लिए हैं, और अब आपको आपके रिफ्लेक्शंस के बारे में भी कुछ फीडबैक मैंने तैयार करना शुरू किया है। और हमने एक और चीज का भी वादा किया था कि हम आपको, वी विल गिव यू, व्हाट वाज इट मेहर? यस, पीबीएल के बारे में, यस वो इट इज, एज आई बीन ट्रैवलिंग, तो नो प्रॉब्लम, यू विल बी गेटिंग सम फीडबैक ऑन ईच ऑफ योर पीबीएल्स एज वेल, आपको ईमेल के जरिए, ठीक? हाँ, अरे भाई वो पीपीटी तो भेज दो, 4 लोगों ने भेज दी है, 2 ग्रुप्स की नहीं है, 2 ग्रुप्स की भेज दीजिएगा, ठीक है जी? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच जी, वी कंक्लूड फॉर टुडे।